This correct communicate Kindly do not tamper with the mics. A very warm good afternoon to one and all. I stand before you with immense pleasure and excitement as we have gathered here today on the momentous occasion of our futuristic entry into the Amrit Kaal. I welcome you all to the Amrit Kaal Vimarsh Viksit Bharat at 2047. A development dialogue in the campuses of higher education institutions in India. Conceptualized and implemented by the Ministry of Education, Government of India, Amrit Kaal, as envisioned by the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, aims to transform India into a developed nation where the benefits of development reach every corner and every citizen as the country celebrates its 100th year of independence in 2047. We are profoundly honored to have with us today the distinguished guest who need no introduction in the academic circles, Professor Raghavendra P. Tiwari, the esteemed Vice Chancellor of the Central University of Punjab, Barinda. He will be gracing this event with his wisdom and insights, delivering a thought-provoking lecture and engaging in an interactive session with the IIT Roper community. During this session, he will shed light on the vision and aspiration of Viksit Bharat at 2047, a future we are all striving to build. We are also privileged to welcome Professor Rajiv Ahuja, the Director of IIT Roper, whose presence adds immense value to this occasion. I also invite all the other dignitaries on the dais. To provide the opening address and share his insights, it is an honor to invite Professor Rajiv Ahuja, the Director of IIT Roper. He is a distinguished scholar and has significantly contributed to the education and development through his extensive work in computational material sciences. With a PhD from IIT Roorkee, he boasts a remarkable career, including his tenure as a highly cited professor at Uppsala University. I invite you, Ahuja, to give the welcome address. Before the welcome address, I would invite Professor Rajiv Ahuja to felicitate our honorable distinguished speaker.
podium. So, good morning, sorry. Good afternoon to everyone. I think some people are still standing there. You can come inside, it's okay. You can come here, there are places. Come. Okay, I think we can start now. We are already a bit delayed. And it's my great pleasure to invite all of you, and especially our esteemed speaker for today. And you know, all of you know that this is the time of Amrit Kal, and our Prime Minister has a vision that how it will be when we celebrate 100 years of the independence. So there are a lot of dialogues are going on, and as you know that you are coming from one of the higher education institutions in India, so actually EI has to play a very important role, because when we are talking now, any country is the richest country in the world, it will be not by money, it will be by intellectual power. And actually, these higher education institutions are in India, they will be the biggest provider of this intellectual population, intellectual power, or intellectual manpower in India. So we can go in Amrit Kal, when we celebrate 100 of years, so we will be not only by economically, but also intellectually will be the number one in the world. So Ministry want to create this kind of dialogue, especially for you young people, because if you count almost there are 23 today's kind of thinking already from now, that how my Viksit Bharat looks like. क्योंकि ये विकसित भारत की जो कल्पना है, we were talking to other people that India was a Viksit 700 years back, but our economy has gone down all those years, and when we got independence, we were only contributing the 3% of the GDP in the world. We have to go back when we were contributing to 40 to 50% of the GDP in the whole world. So we have to go to that golden era, and this is the right time. And India is, everybody knows, we are shining, India is shining, and India is full of belief. India is full of energy now because of you as a young population. So India is the youngest country when it comes to now the population. The average age is around 30 years. So you are
the one where world is looking for us. Because when they talk about intellectual manpower, they look for India. All multinationals want to come to India because they see that India is those kind of intellectual power which they will going to use in the future. For one example, I can take the semiconductor industry. And I know that you all want to go to the IIT, but nobody is thinking about the hardware or the manufacturing sector. And for that, semiconductor is one of the key elements. And whichever the country will lead in the semiconductor, they will lead the world. They will rule the world. So we have to go in that direction, and we are the only country which has that kind of capability and that kind of manpower and that kind of resources. I'm talking about human resources. So with that, I will not take much more time, and as you want to listen to Professor Tiwari, so I have listened to him many places. Before becoming a Vice Chancellor of Central University, Punjab, he was also the Vice Chancellor of the Sagar University in Madhya Pradesh. So he has a vast experience, and he was working for 32 years, almost 34 years in Mizoram and in Northeast. So he has experience about Northeast also, how Northeast is growing, how India is growing. So he is in all big committees, so he has a lot of experience, so we should learn from his experience. And he will like to mention to you, and maybe will focus on that how we can, as IITians, can contribute to the Viksit Bharat. So right now we have 23 IITs. If we can all work together and we can make this Bharat above all other countries. So if you go anywhere in the world, and you should say proudly that I'm Indian, I belong to Bharat. So this kind of feeling we should have, and I know that you all have those energy. You have all things inside you. So you just need to believe in yourself. I can tell you, you are better than Europeans and Americans, because for 30 years I have experience in Europe. So I can tell you, you are the best, and you are the cream. So believe in yourself, and you will achieve what you want to achieve. Nobody can stop you. So with that, I stop here. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. This gathering is an opportunity to gain profound insights into the future of education and the need for the system to adapt and align itself with the dynamic demands of the modern world and to foster the development of our nation. Now, I invite our distinguished guest, Professor Tiwari ji, who will be addressing us on the topic HE Gateway to Viksit Bharat at 2047. So I'll give a small introduction, already sir has given still. Professor Tiwari has a rich academic legacy and is currently serving as the Vice Chancellor of the Central University of Punjab, Bathinda. He also served as the Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar MP. He served as a member of the University Grants Commission and Executive Council of NAC, Bangalore for a term of 3 years. He is in line from Mizoram University, where he served for 32 years in various capacities. Professor Tiwari has headed several committees of UGC, Ministry of Education and Ministry of Science and Technology, Government of India, concerning higher education. Professor Tiwari also specialized in paleontology, GPS geodesy and seismology. He supervised 18 doctoral theses and completed 10 projects through extramural grants. He published nearly 100 articles in national and foreign journals and edited 2 books. Professor Tiwari has been conferred with L. Rama Rao Birth Centenary Award 2012 for significant contribution in Indian stratigraphy and paleontology, and also Dr. S.R. Naqvi Gold Medal Award in 2014. And for significant contribution in Indian geology by the Geological Society of India, Bangalore. I welcome you, sir.
kindly take the podium. Professor Rajiv Ahuja, Honorable Director IIT Open, intellectuals of IIT Open and young brains of IIT Open and young brains of India. It's my prime privilege to be here this afternoon and share some of my thoughts on this very important issue that has really caught the imagination of almost every Indian. Though for the sake of formality, I prepare some slides, but I am not in the habit of making use of slides and taking tips from there and then making the review on any issue, wherever I should do. So just for the sake of formality, but I will be really using those slides. I have the habit of speaking extempore, and I can test your questions and you can test my questions, on this entire generation. Before I actually come to the actual topic, I'd like to mention some of the civilizational traits of our great civilization. Every civilization is based on certain philosophical paradigms, and the citizens are, they follow those paradigms and they try to function, operate, and earn their livelihood within those paradigms. The very first one is that the God is one, and we, the Homo sapiens, have divided them into various forms, and during the course of civilization, those boundaries between different forms of God become very rigid, and then the humanity is divided into different sectors. This is the very first paradigm. And since we believe in this paradigm, this is the first paradigm that was given to us by our ancestors, by our sages, by our saints, to us, and to follow that path. So if that is true, that God is one, then what is the next to follow? So the next one was Vasudhaiva Kutumbakam. That is surfaced on the earth about 4 or 5 decades ago only in the form of a global village. Global village is not more than 5 decades, whereas Vasudhaiva Kutumbakam concept is about 5,000 to 6,000 years ago. Actually, in written form, it came only around 3,000 years ago, but in the minds of the Indians, it is there for the last 6,000 to 7,000 years. Since then, we follow this paradigm. And if that is true, then what is next? Then we were taught, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kasyit Dubhav. So that is the prayer, type of prayer that we used to do. And this prayer has resurfaced again as the motto of our G20, which talks about one earth, one family, and one future. So this derivative is in fact from this sloka, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu. Now if all of us on this earth have to be happy, then how we can ensure this happiness of every individual on the earth? So for that also there has to be some data. And then that came as the very first sloka of our first Upanishad, that is Isopis. So this Upanishad says that whatever resources are available on this earth that are to be used by everyone, not only the Homo sapiens, but all creatures. And that is why when Prime Minister talked about Amrit Kal, and he talked about Viksit Bharat at 47, or India at 2047, India at 100, then you see, it is not only the well-being
this Amritkal is not only for the Homo sapiens, and it is not only for the creatures on the earth, it is for all living and non-living components on the earth. And the Viksit Bharat, the concept, it's the idea why India wants to be Viksit Bharat. हम क्यों विकसित भारत बनना चाहते हैं? किसी दूसरे देश में शासन करने के लिए नहीं, अपना रुतबा जमाने के लिए नहीं, किसी को ऑप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि सभी को हैप्पीनेस देने के लिए, सभी को सुखी देखने के लिए हम विकसित होना चाहते हैं। हमारी विकसित होने की जो कल्पना है, हम उद्देश्य है, वो ये है कि हम इतने विकसित हो जाएं, हम इतने सामर्थ्यवान हो जाएं कि दुनिया में किसी भी तरह की कोई कठिनाई, कोई समस्या जो आज अभी परसों ही जो समस्या शुरू हुई है, हमारा कहना इतना हो जाए, हमारा से जैसे इंडियन लर्निंग सिस्टम में IIT का से बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से वर्ल्ड व्यू में हमारा वर्ल्ड में जो whatever affairs are happening, whatever things are happening, whatever developments are happening, हमारा से हम इतने मजबूत हो जाए कि हमारी बात को मानने के लिए विश्व मजबूर हो जाए और हमारी बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारा सिविलाइजेशन डिस्कोर्स था। और इसी वजह से we are recognized as the oldest living civilization on the earth. Many other civilizations which originated after us flourished and they became extinct. Because maybe the very foundation of civilization was not that much strong. When we talk about civilizational discourse, it cannot be the reversible process. It has to move ahead. And the ideas, the concepts, and the paradigms, the morals, the ethics, that have to advance all the time. And they have to take us to the higher pedestal of humanity. That is, we call, the development of this civilization discourse, the evolution of civilization discourse, the progress, the dynamism in the society, the dynamism in the thought process. So, with this background, and also, another thing that India the advantage has is we are the youthful nation. Around 35% of population is in the zone of what we call it that grass environment risk. So India is the most youthful nation, and if we do not capitalize this demographic dividend, after 30 years, 40 years, India will be the most aged country. All of it become old. So transition from youthfulness, youth stage to the old stage. This is actually the Amritkal. And the actual meaning of Amritkal is the auspicious occasion to start new beginning, to start new initiatives. Education institutions are meant for three things. Number one is to meet the intellectual imperatives of the humanity, not only this, of the humanity. Because we never believed in the rigid boundaries of the knowledge. For us, it is Ano Bhadra Kritvo Yantu Vishwata. Let the knowledge come from anywhere. We should keep or open our windows, our eyes and minds, and we should receive knowledge from all around. Of course, we need to analyze that whether that piece of knowledge is relevant for us in our own circumstances, in our own ground realities, and if it is not, then we need to customize that information, that knowledge, and then we should embrace that, so that we are really beneficiary of that piece of knowledge. So that is our idea. So intellectual imperative means, where research, innovation, entrepreneurship happening, new ideas are emerging, new processes are involved, new products come,
Aligarh Park the research is done. So, this, there are certain institutions, they are research-focused institutions. So, they largely meet the intellectual imperatives of the society, of the nation, or of the humanity. Then we have economic imperatives. That's very important, and that is why, now we are fifth largest economy, and we intend to become third largest within 10 years or so. So this can be done only when the higher education institutions meet the economic imperative. That means they make their students so much skillful that they earn themselves, they earn for the nation, they earn for the society. So, economic imperative, and this imperative is very important, particularly in the current world where we are beset with a lot of conflicts, with a lot of difference in opinions, and unfortunately, what is happening is difference of opinion leads to differences in the hearts. I always say that हम लोगों को मतभेद रखना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं रखना चाहिए. Difference of opinion has to be there in any civilized society, but उस difference की वजह से मनभेद ना. और इसका रिवर्स आप कर दीजिए. यदि मन मेल है, तो उससे मतभेद नहीं उठना चाहिए. नहीं तो नए नैरेटिव्स नहीं बनेंगे, नया डिस्कोर्स नहीं होगा. तो दोनों बातें हैं, लेकिन मतभेद की वजह से मनभेद हो रहा है, और यही सभी समस्या का जड़ है, चाहे हम अपने देश में देखें या कि किसी दूसरे कंट्री में, विदेशों में देखें. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको रोकने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ साथ इकोनॉमिक इम्परेटिव में भी बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा. तीसरा इम्परेटिव है सोशल इम्परेटिव. सोशल इम्परेटिव में तो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जैसे IITs, their focus is on offering professional courses. So generally economic imperative. Now the third one is social imperative. Because as the civilization grows, as we move ahead, several types of aberrations emerge in the society. That has happened in the past, that is happening now, and that will happen in the future as well. How to, develop counter narrative so that these aberrations actually do not destroy the civilization? And what are the emerging needs of the society? What are the solutions that the society is looking for from higher education institutions? So that is actually the social imperatives. So, all these three types of imperatives, if we import in the idea of Viksit Bharat, we find that if we make these three imperatives strong, the higher education institutions, then we can really serve as a gateway for Viksit Bharat at 47. So, this is the idea. Now, we all know that in India, we have diversity in terms of all aspects of human endeavor. In all aspects of human life, we have diversity. If you are taken to Mizoram and with closed eyes, with band on your eyes, and if your band is open in Aizawl or any part of Mizoram, for that matter in Nagaland or Meghalaya, you will not believe that you are in India, because you are accustomed to this type of topography, this type of dress, and a particular type of your dietary preferences. But when you go to northeast, of course excepting Assam, a lot of diversity. Within community, there are sub-communities. Within identities, sub-identities, differences. Nagaland, there are 18 major tribe groups, and everyone has their own local dialect. So if one tribe, Naga tribe, wants to talk to another Naga tribe, they cannot talk. So they evolve
economic diversity. Some people are very rich, some people are very poor, some people even at this stage also, at this point of time in our progress, around 10 crore people, they do not get twice meal a day. So and then employment. So that is another issue. Then there is gender diversity, for which recently the bill was brought in the parliament, reservation in the election, parliamentary and other seats. So huge diversity. And the idea of Viksit Bharat, the Amrit Kal, is to make initiatives to balance all these types of diversities and then meet the aspiration of every group, every community, and even the life beyond home settlements. When we talk about this international millet year, and millet, that is very nutritious and it is not harmful like wheat or rice for that matter. When we grow millet, rice, the birds, they cannot eat rice, they cannot eat wheat. But if you grow millet, they will eat it. Believe me, this year we planted millet in 3 acres in our university campus and we did not get single grain. All were eaten by the birds, and for the first time we saw thousands of birds in the university campus. So that is Amrita, not only to provide food for me, but for all creatures. So that is why, if we see different aspects, different components, different initiations that government of India has made, it is to cover, it is to benefit all sections of the society, across all spectrums, across all type of diversities, for all type of creations on the earth. And that is why, you will find in some initiatives, one is very important, that is green initiative. Green initiative. There are several wonderful ideas which have never happened, that have never caught our imagination. For doing all these initiatives, making all these initiatives possible, and for drawing new narratives for Viksit Bharat, how much our Honorable Prime Minister will be involved in thinking in the thought process, and then supervising the implementation of all those schemes. I was talking about green initiative. Under this, all along the coastlines, plantation will be done. And whatever wetlands are available in India, these wetlands will be put into optimum use. So this is one. And the third one is that is up to us to make it possible that alternative to chemical fertilizers. The chemical fertilizer, we know that all our soil, our water, our air, why life is possible on the earth? It is because of 4 components which are suitable for existence and proliferation of life: lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Due to these things, we have biosphere on the earth. Since these 3, lithosphere, hydrosphere, atmosphere is not available, say in moon, and all other planets not yet known, maybe in future we come to know that they are there. But as on date, whatever information we have, these are not available. That is why God is focusing only on the earth. And sometimes we say, well, what is important for Viksit Bharat? But the important for Viksit Bharat is that we do not spoil any one of these life-sustaining components of the earth. But we are actually doing that. So, here lies the significance of higher education institutions, how we can provide alternative to all those things which are polluting our soil, polluting our hydrosphere, or water bodies, including the sea, and also
the atmosphere. So this imperative has to be met by higher education institution. That is why I say higher education gateway to Princess Bharat 47. So all this is the other thing so this is all sinking the biosphere reserve on the earth because all are polluted. Now hardly you get any soil biota. In agriculture, just agriculture, there is one paper called soil microbiota. उसमें कुछ माइक्रो बचे ही नहीं है. इतना हम खाद डाल करके उनको सबको मार डाले हैं. हम लोग when I was a child, there used to come a question that name the farmer's friend, earthworm. आप लोग सुने नहीं होंगे कि earthworm है farmer's का friend, क्योंकि अब earthworm बचे ही नहीं है मिट्टी में. तो ये है अमृतकाल की जितना भी लाइफ सस्टेनिंग कंपोनेंट है, उसको हम कैसे जुडिशियसली उसको यूज करें. इसीलिए अमृतकाल ने लॉन्च किया आइडिया ऑफ लाइफ वेयर we take care of nature and then only nature will take care of us. See why our way of life, Indian way of life is different than the way of life of other communities. All communities on the earth believe that we are creature of God. This everyone believes. All faiths on the earth, they believe that we are creature of God. But we think beyond this. Our civilization thinks beyond this. Yes, we are creature of God, and the second one, we believe that since we are creature of God, therefore divine energy is present in all creations of the earth. All living and non-living components of the earth, divine energy is present. And beyond that, we also believe that whatever we see around is extension of ourselves, extension of myself. Whatever is available on this universe, that is extension of myself. When I believe in this, I feel interconnected with every object. I feel interconnected with all of you here. I feel interconnected with rivers, with mountains, with plains, with glaciers, with sea, with planets, with all components of the universe. When we develop this idea that everything on the earth is the extension of myself, then we feel interconnected. And when we feel interconnected, we never feel to destroy anything. So that is what our civilization is important. And that is why this Amrit Kaal envisages well-being of everything on this universe. And our youthful population is the major instrument to implement these ideas. And that is why that Honorable Prime Minister interacts with all. You see, मन की बात में वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही बुलाते हैं. तो ये इस तरह की फिलॉसफी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सब we commit each one of us commit ourselves to contribute to this Viksit Bharat policy. That is very important. I'll cite one very good reference to you. When Ram Setu was being built, so there was Vanar Sena, everyone, they are taking big stones, mountains, hills, and placing on way to bridge Ram Setu, but one squirrel simply looking on the bank of the sea, on the sand, and thinking they are doing great job, and I am sitting simply. So what history will write about me? That when Ram Setu was built, squirrel did not contribute anything. So she developed guilty conscience, and she started, playing with the sand so that some sand particles become attached with her hair, and then she went to the side, and then she shook her body, and then sand particles settled down along other borders and
इसकी बात करें अपना जो, अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, एजुकेशन के मुख्य पॉइंट में आऊंगा। आप देखें कि डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात आपको बताई, और ये कोई हियर से नहीं है, आप सबके पास सेल फोन है, यू कैन गूगल इट आउट। एंगस मेडिसन करके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनको यूएनए ने याद दिया फॉर ट्रेसिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, एंड वी ऑल नो दैट इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो एंगस मेडिसन स्टडी, and then he submitted the report. So the crux of the report is that when Mughals came to India, that time the contribution of India in the world production was nearly 40%. This is not my data, you can always check it. Then when Britishers came, by that our contribution was reduced to nearly 24%, 40% to 24%. And when Britishers left in 1947, you know the base year he made, Madison made base year as 1950, not 47. So in 1950, our contribution came down to 3%. This is the report finding of a British economist. Now you can imagine how that was possible, how India was so prosperous. What was the reason, contributing reason, that India produced 40% of world's production? How that was possible? And what was the type of education system that was prevailing in India to make India so rich that naturally, that this point comes to our mind. So, and the only possible answer for us is that, the type of education system that was prevailing in ancient India, only that is the answer. So, the Gurukul system naturally comes to our mind that in ancient India, the learning system was Gurukul system. I am not going to detail, but I will give you 2-3 traits. Intellectual imperative, economic imperative, and social imperative has to emanate from higher education institutions. And if we take care of these things, the very idea of Basic Bharat 47, and also all programs outlined there, I request Director Sahab to upload my slides in the IIT's website. You can always see, that will be available to you. So, so I will give you 3 more important traits, basic traits of good politics. Now, in 29 July 2020, India talked about multidisciplinary holistic. In Gurukuls, 16 subjects and 64 skills were taught. So you can imagine the type of multidisciplinarity that was existing in the Gurukul system of education. This is number 1. Number 2, the Gurus never taught the Sishyas. They never taught. What they did is, they just trained, they just sharpened the instrument of learning present in the human beings. Whatever organs, body organs, mind, heart, चित्त, जो भी इन्वॉल्व है सीखने की प्रक्रिया में, उनको और तेज करें। और आप वहां पर आप स्वामी विवेकानंद जी का स्थान लगा दीजिए कि every human being is endowed with some ability, some quality, and it is the duty, bounden duty of the teacher to recognize that quality of every student and help him to sharpen that quality, and that quality becomes his skill, and through that skill he or she earns livelihood for himself, herself, for the society and for others. So that was the approach to learning teaching in Gurukuls. And evaluation, I am telling you, the type of evaluation
we were very naughty when we were small child. And we were all the time quarreling that today mother will cook the food of my liking, and my mother was quarreling, no, today it will be my liking sweet. So my mother used to get disturbed, so she said that आपको एक काम करना पड़ेगा, और उसमें जो जीतेगा उसी के पसंद का खाना मैं 15 दिन तक लगा करता हूँ। मेरी माँ ने 2 आम की गुठली, एक मुझे दी और एक मेरे भाई को, बोली आप दोनों इनको जमीन में डाल दो, जिसकी गुठली पहले अंकुरित हो जाएगी उसके पसंद का खाना 15 दिन तक बनेगा। हम हमने डाल दिया। अब देखा कि 9वें 10वें दिन मेरे भाई की गुठली अंकुरित हो गई, मेरी नहीं हुई। मैं अपनी माँ को बोला कि आप माँ मेरे साथ चीटिंग की है। तो बोली कैसे चीटिंग की है? बोले कि आपने उनको अच्छी गुठली दी थी और मुझे सड़ी हुई गुठली। तो मम्मी मेरी मुझसे पूछती है कि तुमको कैसे मालूम कि मैंने उसको अच्छा दिया था, तुमको सड़ा दिया? मैं बोला कि मैं सुबह को उसको खोल के देखता था कि उतरा है कि नहीं हुआ। तो इस तरह का इवेल्युएशन नहीं होता था कि आज पढ़ाओ और शाम को पूछो। आइडिया, आप कोई आइडिया स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको एसिमुलेट करने के लिए उसको टाइम चाहिए, समय चाहिए। तो ये वो गुरुकुलों में मिलता था। और ये इवेल्युएशन का दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप उसको सोचें, उसके बारे में सोचें, उसको इन्वाइट करने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में पैटर्न में चेंज करना डायरेक्टर तो सोचते हैं, वाइस चांसलर तो सोचते हैं, स्टूडेंट्स उसको कितना रेडी है तैयार करने के लिए सिस्टम। मैं हमेशा आई ऑलवेज फेवर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नंबर 1 एंड ओपन एग्जामिनेशन। ये होना चाहिए, नहीं हो पाता, ये इसका विषय अभी इसका विषय नहीं है। गुरुकुलों में इवेल्युएशन ऐसा होता था कि जो भी किताब थी, जो भी पुस्तक, वेद उपनिषद उस समय थे, तो गुरु बैठ जाते थे और एक लकड़ी का एक सीख ले और आपको बुलाए, उस सीख को किसी भी पेज में डाल के पेज पलटा, पेज नंबर आया, वो उससे फिर बताओ इस पेज में क्या लिखा। फिर पूछते थे जो लिखा है इसका मतलब बताओ। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये तो जो आखिर का जो ये मैंने इंटरप्रिटेशन आपको ये बताया कि इसका जो लिखा है इसका इंटरप्रिटेशन ये है, आप क्या इसका, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न होता था कि आप इसको जो इसमें जो ज्ञान है इसका लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है। 4 इस तरह के प्रश्न गुरु विद्यार्थी से पूछते थे। अब आप देखिए कि कितना ज्यादा इन्वॉल्व करते थे वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में, कितना ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका देते थे सोचने का। ये मैं इंटरप्रिटेशन बताया हूं, आप बताओ कि आपके हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ना? तो ये इस तरह की एजुकेशन, और इसलिए इतना अच्छा प्रोडक्शन हमारा था 40% मुगलों के आने के पहले। अब मैं आज के करंट का जो लर्निंग सिस्टम है उसकी क्या समस्याएं हैं उसमें बात करूंगा, और जिससे कि हम सब हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तीनों इम्यूनिटी को मीट करके विकसित भारत 47 में अपना अपना योगदान दे पाए। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितना चिंता और चिंतन, देखिए 2 बातें, एक चिंता और एक चिंतन। केवल हम चिंता करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, चिंतन करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। आप देखिए कि कितने कितने स्लोगन हमारे आने प्राइम मिनिस्टर ने दिया, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये कोई भी लीडर वो ये देता है, उसका काम होता है कि अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाए, और उसको तो ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए जो चीजों की आवश्यकता है उसमें सब इंडियन सिविल सोसाइटी इतना ज्यादा डिवाइडेड है, वहां ये सीमेंटिंग फोर्स का काम कर रहा है। और जब ये हमारी सोसाइटी इकट्ठा होगी, ऐसे किसी को मारो तो ज्यादा नहीं लगेगा, ऐसे मारने से ज्यादा लगता है, तो जब सभी सोसाइटी इकट्ठा होगी तभी विकसित भारत बन पाएगा। उसके लिए ये बहुत जरूरी है
उन्होंने लोकल का वोकल का वो दिया, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, तरह तरह के अभियान जो कि आवश्यक है आज के दिन में, ऐसे सभी अभियान हमारे आंध्र प्रदेश से चलाए, हमें दिशा दी। अब हम पर निर्भर है कि हम उस दिशा में कितना आगे चलते हैं और हमारा क्या योगदान है, क्योंकि हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारी भी रोजी रोटी इसी देश से चल रही है और हमारा भी सर्वाइवल यहाँ यदि भारत विकसित होगा तो सभी खुशहाल होंगे और जो हमारे पूर्वज ने जो कल्पना की थी, सपना की, वो फलीभूत होगी। इससे सभी का योगदान करना अति आवश्यक है। अब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है IIT में बेटर है, मुझे मानना चाहिए, लेकिन आप देखें कि क्लोज टू प्लस 40,000 कॉलेजेस हैं हमारे देश में, अराउंड 12,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 165 हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं, ये सब है। तो इनमें भी जो शिक्षा का स्तर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। ऑल एजुकेशन आर नॉट एट पार, दे आर नॉट, एंड ऑल लर्नर्स दे डू नॉट एंजॉय प्लेइंग फील्ड, सबके लिए अलग अलग परिस्थितियां, लर्निंग इकोसिस्टम डिफरेंट। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, हाउ टू मेक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हो गई, इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्यादातर मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, कुछ और उनमें ऐड करने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से NEP 2020 में जो स्टिपुलेशन है। तो और करिकुलम है, मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम इवॉल्व हो रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या है, 2-3-4 समस्याओं की मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हाउ टू मेक classroom as active place centers of learning, active centers of learning. In most of the education institutions, classrooms are merely passive centers of learning where information flows from one head to the several heads. And there is no involvement of the students. Now it is no more teaching, it is now learning and learning teaching process. Whenever for any classes to take place, there are several components, there are several players in the process. Chemical reaction में बहुत सारे compounds होते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चिंता है कि how to make this classroom interesting so that students are attracted in the class, they have full attendance. So इसके लिए, and here every teacher, I always say that every teacher is vice chancellor in his or her classroom. IIT रोपड़ में जितने टीचर हैं, सम्मानित शिक्षक हैं, वो सभी डायरेक्टर हैं अपने क्लासरूम। वो क्लासरूम को कैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये उन्हीं पर पूर्ण रूप में निर्भर सभी। हमारी यूनिवर्सिटी में सभी टीचर जितने हैं क्लासरूम में वो वाइस चांसलर, जो डिसीजन को लेना, जैसे पढ़ाना है, वो उनको फुल फ्रीडम है। बाकी सब में और में पोस्ट डिजाइन में ज्यादा फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ स्टडी है, स्कूल बोर्ड है, एकेडमिक काउंसिल है। लेकिन पेडागॉजी में, पढ़ाने की पद्धति में कैसे स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, इसमें फुल फ्रीडम है। तो इसको कैसे किया जाए? अभी देखिए ये कंसेप्ट आ रहा है लर्निंग सिस्टम में, वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम में, कि नो मोर पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। अभी सब इंटरनेट में इतना ज्यादा उपलब्ध है, थोड़ा शिक्षकों को मेहनत करके और उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी उसमें गलत सूचनाएं भी होती हैं, और वो स्टूडेंट्स को पहले से देना है। स्टूडेंट पढ़ करके आएंगे, एंटायर क्लासरूम स्पेस यूज्ड फॉर डिस्कशन, डिबेट्स, डिस्पुटेशंस एंड डिराइविंग द एप्लीकेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पीस ऑफ। यही आप देखिए कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी 1952 में ब्लूम ने, जो ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट था, उसने टैक्सोनॉमी बनाई 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग मॉड्यूल, 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग, और द अल्टीमेट इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज। कोई लर्निंग मॉड्यूल आपने सीखा है, आपका सीखना तभी कंप्लीट होगा जब उस लर्निंग मॉड्यूल में आप कुछ नया ऐड करें, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। ये दैट इज द 6th लेवल ऑफ लर्निंग इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। दैट वाज हैपनिंग इन द
गुरुकुल, 6 तरह के शिक्षक गुरुकुलों में होते हैं। यदि आप 6 तरह के शिक्षकों का रोल इसमें दिया हुआ है, आप लोग देखिए उनका रोल, और ब्लूम की कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में 6 टाइप्स ऑफ टीचर्स, और यहाँ 6 फॉलोइंग जैसे प्रश्न आता है, आप मैच कर सकते हो। आप फ्लिप मतलब उल्टा, आप क्लासरूम में टीचर को सुनते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, घर में उसके बारे में सोचते हो हॉस्टल में, इसको उल्टा कर दीजिए, इंफॉर्मेशन हॉस्टल में लीजिए, और जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसके बारे में पूरा सोचना का काम जो है आप क्लासरूम में करें। तो यही एक पद्धति है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये बोलते हैं कि हमें क्लासरूम को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे जैसे थिएटर में सभी पब्लिक बैठ करके पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मूवी वॉच करती है, उसी तरह का पिन ड्रॉप साइलेंस रहे, बच्चे इंटरेस्ट के साथ टीचर को सुने, उससे डिस्कस करें। ये कई बार हम लोगों को एड्रेस करते हो वाइस चांसलर को, IIT के डायरेक्टर, हमेशा वो ये बात बोलते। तो ये इस तरह का और फुली इन्वॉल्व होकर सीखना, आज जो स्किल गैप है हमारे जो प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, केवल इंडस्ट्री का नहीं, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए, और जिस तरह का इंटेलेक्चुअल थॉट क्लासेस, नए नैरेटिव, न्यू पैराडाइम्स इमर्ज होने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में ये गैप बहुत ज्यादा है। यदि आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को भी मिला लेंगे तो अभी नॉट मोर देन 20% रिप्रोड्यूस स्किल्ड वर्क, तो 80%, दैट मीन्स 80% they are not eligible to serve either the industry or the society. तो ये इस स्किल गैप को कम करने की जो सबसे बड़ी चिंता है, और जो एक बहुत बड़ी चिंता है, आज आप लोग यहाँ बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आज 10 साल बाद किस स्किल सेट की आवश्यकता होगी ये हम लोगों को नहीं मालूम, आपके टीचर को भी नहीं मालूम है कि 10 साल बाद वर्क प्लेस में किस तरह के स्किल सेट की आवश्यकता होगी और किस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप स्किल सेट डेवलप करें। ना टेक्नोलॉजी मालूम है और ना स्किल सेट मालूम है। तो इस सिचुएशन में कैसे टीचर्स ट्रेन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। तो इसका जो सबसे सुगम समाधान है वो ये है कि हम विद्यार्थियों को, अपने यूथ को, emphasis should not be on what to teach, but emphasis should be how to learn। यदि हम उनको इसमें मास्टर बनाएंगे, सीखने की प्रक्रिया में उनको मास्टर बनाए, जो NEP में लिखा हुआ है कि हमें अपने युवाओं को लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना, उसके लिए हाउ टू लर्न की ट्रेनिंग हमने अपने युवाओं को देनी है। तभी वो जो भी चुनौतियां आगे भविष्य में आएंगी, फ्यूचर विच इज इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस, तभी आप उन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे और हम विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। तो एम्फेसिस इस पर होनी चाहिए। दूसरा बात है कि जो एक और जो बहुत बड़ी समस्या है जिसको NEP 2020 एड्रेस करती है, वो है जो ड्रॉप आउट रेट्स और प्रोग्रेशन फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू ग्रेजुएशन एंड फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टू PhD प्रोग्राम्स। और जो हमारा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है विच इज नाउ ओनली 27%, और ये 27% जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है, और यदि टोटल सिस्टम से कितने निकलते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से, तो करीब 20% आते हैं। 27% का तो इनरोलमेंट हो रहा है। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो मतलब कि 12वीं के बाद टोटल जो पॉपुलेशन है जो पढ़ने के रेंज में, उसका कितना प्रतिशत इनरोलमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये 27% है। और जो पास आउट होते हैं वो होते 20% बचते हैं। उसमें भी कितना ज्यादा स्किल गैप है जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। अब आगे आप
देखें कि इसको हमें 50% ले जाना है, एनईपी बोलती है इसको 50% ले जाना है, अमेरिका का करीब 80%, ब्रिटेन का 50% ग्लास लिमिट, हमें इसको 50% हम सोच रहे हैं कि हम 2040 तक इसको 50% ले जाएंगे ग्लास लिमिट से। और ये तब अमेरिका का ब्रिटेन का कितना आगे हो जाएगा, है ना। तो ये इसको ग्रास एनवायरनमेंट रेशियो को कैसे ठीक करना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या और होनी चाहिए, और उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लर्निंग जो आ रहे हैं, जो हमें विकसित भारत बनाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि आप लोगों को मालूम भी होगा, शायद आप लोग किसी दूसरे IIT के कोर्सेज जो आप कर रहे हैं उनको आप कर रहे होंगे, जिनको हम ऐसे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो इनको आप यहाँ IIT रोपड़ के विद्यार्थी होते हुए आप यदि को कोई कोर्स अच्छा लगता है IIT बॉम्बे का, तो या कि IIT खड़गपुर का कोई कोर्स, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई कोर्स आपको अच्छा लगता है कि वहाँ अच्छा उनका कंटेंट है उस कोर्स में, और वहाँ जो टीचर है इज बेटर देन टीचर अवेलेबल हियर, और ये बात वहाँ के लोग भी सोचते हैं, तो आप उसको उस मूव को आप ऑन कर सकते हैं, और क्रेडिट ट्रांसफर से वो आपके पास आ जाएगा। उस कोर्स का जो भी क्रेडिट है, 4 क्रेडिट है, 3 क्रेडिट, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट में हो जाएगा। तो इसमें ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिससे कि, और इसका दूसरा एडवांटेज ये है, आप अभी यू आर एक्सपोज टू ओनली लर्निंग सिस्टम ऑफ लर्निंग इकोसिस्टम ऑफ IIT रोपड़। यदि आप किसी IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या किसी दूसरे IIT से या आईसर से या JNU से आप कोई कोर्स करते हैं, तो यू आर एक्सपोज टू सेवरल टाइप्स ऑफ लर्निंग इकोसिस्टम, और हर एक की यूनिकनेस होती है लर्निंग सिस्टम। तो इससे आपका जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ आप यदि स्टिपुलेटेड टाइम में यदि आप प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का काम होने जाएगा। तो ईज ऑफ लर्निंग जो होनी चाहिए, एक्चुअली ईज ऑफ लर्निंग, वो एनईपी में एक उद्देश्य भी है कि ईज ऑफ लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी तरह से ईज ऑफ लर्निंग भी होना चाहिए। तो उसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट कंपोनेंट, ये इसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसको रियलाइज करने में। तो ये एक कंपोनेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहे हैं, और इसमें मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा। I just said earlier, the type of skill sets that are required today may not be required down the line after 5 years or after 10 years. So skilling, reskilling and upskilling, all of us have to be ready for this. Unskilling भी जरूरी है। When we will do reskilling, when you do away with your known skills and embrace new set of skills that are required to perform particular type of job, तो ये इससे करने के लिए, और दूसरा जो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये मॉडल कोर्स करिकुलम आपका 10-20% एवरी ईयर इररिलेवेंट हो जाता है, उसको अपडेट करना। तो ये आपका रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, उसके हिसाब से भी परफॉर्म करना और लर्निंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना। तो जब हम अपने लर्निंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी हमारा इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पेरेटिव्स मीट करेगा, तभी हमारा विकसित भारत बन पाएगा। इसमें देखिए, जो विकसित भारत का आइडिया है, जैसे मैं पहले कहा, ये इसलिए है कि आज जिस तरह की समस्याएं, इकोनॉमिक समस्याएं हमारे देश में हैं, वो न रहे, जिस तरह के सोशल सामाजिक समस्याएं हैं वो न रहे, और जिस बौद्धिक क्षमता की हमारे युवाओं में, सभी लोगों में, सभी सिटीजन्स में जिस तरह के बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए, उस तरह का विकास हो पाए, सभी खुशहाल रहें। आप देखिए कि अभी टेक्नोलॉजी
यू आर सिटिंग इन द सीट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा, यू नो, नाउ आवर एजुकेशन हैज टू बी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, और इसका हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स. तो इसमें आप देखिए कि आज डेटा हम देखें तो करीब 6000 किसान, अभी बिगिनिंग है, 6000 किसान AI के द्वारा अपनी एग्रीकल्चर को मैनेज कर रहे हैं. इरिगेशन से लेकर के उसको जो इंसेक्ट्स लगते हैं फसलों में उनको मैनेज करने के लिए और पानी देने के लिए, सब चीज के लिए, और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए रोबोट्स का यूज हो रहा है. करीब 6000 किसान. इसको कैसे आगे बढ़ाना? जब ये आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित होगा. एक्ट 40 से इसको कैसे एम्प्लीफाई करना, AI को कैसे अपने लर्निंग सिस्टम में वो करना. AI का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग टेक्नोलॉजी में मुझसे ज्यादा जानते हैं. अभी देखिए कि लर्निंग में जो एक समस्या और है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं ये मान के बोल रहा हूँ कि आप सब यू आर ऑन द सेम पेज, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. सेम पेज ऑफ लर्निंग, आपका लर्निंग कैपेसिटी, आपका स्टाइल ऑफ लर्निंग, मोड ऑफ लर्निंग, डायरेक्शन ऑफ लर्निंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब एक समान है. हम ऐसा मान के चलते हैं. कोई भी क्लासरूम में शिक्षक यही मान के चलता है और उसके हिसाब से कि वो टीचिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सबका अलग अलग है. तो AI is potent tool for mind mapping to know all these learning attributes and classify the classroom into different groups so that teacher can treat them differently. इसमें AI का बहुत बड़ा रोल ये हो सकता है और ये करना आवश्यक है. नहीं तो हमारा शिक्षकों का दिमाग हमेशा फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर, इसी चक्कर में फंसा रहेगा. और अभी जो हम एटीट्यूड्स निकाल रहे हैं फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर्स के, ये सब रिलेटिव है. ये रिलेटिव है क्योंकि मार्क्स जिसको ज्यादा मिल गया उसको हम फास्ट लर्नर मान लेते हैं, जिसको कम मिला उसको स्लो लर्नर मान लेते हैं. तो ये इसको एक्चुअल साइंटिफिक वे में इसको करने के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने. एक ये भी है कि अभी हम चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन हम अभी फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मे बी विद इन अंडर 10-15 ईयर्स हम कहीं कंप्लीट रूप से ही ना वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा अपनी लाइफ बिता देंगे. तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है. एजुकेशन में भी, डिफेंस में भी. आप देख रहे हो कितने ड्रोन्स आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, क्या क्या करके यहाँ जाते हैं, और बाकी चीजें. तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग हमें कंप्लीट करनी है. अंत में मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे मैं बोला कि बूंद बूंद से घट बने. आप सभी का सहयोग, यदि इस देश का प्रधानमंत्री इतना चिंता कर रहा है, इतने नए नए हमें अपने जीवन का उद्देश्य, ये भारत वर्ष विकसित बनेगा, भारत वर्ष विकसित बनेगा तो यहाँ के सभी लोग विकसित बनेंगे. तो इतनी मंगल कामना, इतनी इच्छा जिस प्राइम मिनिस्टर में हो, उस देश के लोगों को, जनता को, युवाओं को इसमें उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, विकसित भारत की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी आहुति देनी पड़ेगी, तभी भारत हो पाएगा. और यही भारत सरकार का यही लक्ष्य है और इसीलिए इसको भारत सरकार बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है. आप लोग एक डॉक्यूमेंट और पढ़िएगा जो अभी G20 हुआ था, इतना सक्सेसफुल G20, उसमें there are 7 takeaways for education, for higher education. This is available in the net. आप उसको देख लीजिए. उसमें उसको हम अपने आप को हमें उसके उनको टेकअवेज को कैसे, उनका फायदा कैसे लर्निंग सिस्टम में, केवल हाई एजुकेशन के लिए 7 टेकअवेज, उनको हम अपने लर्निंग सिस्टम को भाग कैसे बना सकते हैं, उनके हिसाब से हम कैसे अपने युवाओं को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि हम उन्हें एम्पावर कर सकते. इतने युवाओं को एम्पावर करना बहुत जरूरी है. ये बोल देने से नहीं होगा कि स्टूडेंट
सीख नहीं रहे। उनको सिखाना बहुत जरूरी है और वो तभी होगा जब पुनः जो मनोभावना है, गुरु शिष्य की मनोभावना। आप देखिए कि एकलव्य को अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनना था। उन्होंने वो गए द्रोणाचार्य जी के पास, द्रोणाचार्य जी ने मना कर नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने उनकी प्रतिमा बना करके और सीखा और अर्जुन से बड़े धनुर्धर बन गए। उसके बावजूद इतने स्किल्ड हो गए वो कि द्रोणाचार्य को लगने लगा कि कहीं अर्जुन का जो सबसे बड़ा धनुर्धर का सम्मान है वो कहीं खो न जाए, उसका बेचारे का अंगूठा मार लिए। लेकिन उसकी भी हिम्मत देखिए, साहस देखिए कि गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अपना अंगूठा काट के दिया। यह है गुरु सिस्टम। और एक अच्छे लर्निंग सिस्टम में वाइस चांसलर डायरेक्टर का रिलेशनशिप विद टीचर्स, म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि ये वाइस चांसलर का डायरेक्टर बनना, मैं हमेशा बोलता हूं कि ऊंट की सवारी करना, हमेशा जब होता रहता। डायरेक्टर और स्टूडेंट्स ऑन द सेम पेज होना आवश्यक, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन द सेम पेज होना आवश्यक, सपोर्टिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड डायरेक्टर हैव टू बी ऑन द सेम पेज। इसको जब हम इंश्योर करेंगे तभी हमारे हायर एजुकेशन का जो मैंडेट है हम तभी उसको पूरा कर पाएंगे। ये भी एक बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं माननीय आहूजा जी का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का और आप सब लोगों से बात करने का। मैं एक बात कंक्लूड करने के पहले एक बात बोलूंगा कि आपके डायरेक्टर साहब बहुत ही ज्यादा विजनरी हैं। उनके इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन इन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पंजाब में है, हम लोग MOU साइन करेंगे, बात एकेडमिक कोलैबोरेशन। देखिए हम फिफ्थ इकोनॉमी है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दोगे तो जो पर कैपिटा इनकम है वो हम उसमें हम पता नहीं कहाँ 100 के अंदर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो अभी भी हमें किस मॉडल में काम करना है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स करने के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम हैव टू कम टुगेदर, दे हैव टू एंटर इनटू MOU। आपके डायरेक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और नॉर्थ इंडिया की 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने IIT के साथ MOU साइन किया। और इसमें इसका मैंडेट बहुत अच्छा है। आप हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, आप चाहे हमारे यहाँ कोर्स आपको अच्छा लगता है आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए यहाँ आ सकते हैं, टीचर्स कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पढ़ाने जा सकते हैं, हमारे यहाँ के टीचर्स यहाँ पढ़ाने आ सकते हैं। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर सकते हैं इस MOU के अंदर। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं आपको बता दूं कि केवल अपने देश में केवल आपके ही डायरेक्टर ने ऐसा इनिशिएटिव लिया और कोई दूसरा डायरेक्टर IIT का ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। एक हैंड होल्डिंग की बात आती है। जब एक परिवार में 2-3 भाई हैं, एक किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, कोई दूसरा का नहीं है, तो उसको हैंड होल्डिंग करते। इसी तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी हैंड होल्डिंग कोलैबोरेटिव मोड में सभी टीचर्स को, यहाँ जो टीचर हैं उनका हक केवल यहाँ के स्टूडेंट्स का नहीं है, टीचर होता। हमारे यहाँ जो टीचर हैं उनका हक केवल हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का नहीं है, आप लोगों का भी हक उन टीचर शिक्षकों का। तो इस तरह से कोलैबोरेशन से यदि हम काम करेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो विकसित भारत का जो आइडिया है वो जरूर सफल होगा। और देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। जैसा मैं पहले कहा, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होना चाहते हैं विश्व कल्याण के लिए। और इस सब के लिए हमें सबको अपने आप को इस पुनीत कार्य में विकसित भारत 2047 इसकी सुगत प्राप्ति के लिए हम सबको अपना अपना योगदान सुनिश्चित करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डायरेक्टर महोदय को, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ मुझे आने के लिए और
अपने कुछ विचार आ सकते हैं। That was such an insightful lecture. So now the floor is open for discussion and questions. So we have a 10 minutes window, after which we proceed for the tea and snacks. So if anybody wants to ask any question or raise any concerns, please we have an open discussion. This is about our education policies, anything related to NEP, the form of education, the vision that our Honorable Prime Minister has put forward. I think I can start. How many people believe in this picture? It's the last one, yes. Very few. So you believe? Yeah, you can ask questions. You take this mic and tell me why you believe. And you can ask the question. So, like, we need a company everywhere where we go. So the company is the most important thing a person carries itself. I believe in the future. We have to work together. It means we have to work together. Yes. Unity matters everywhere, in every organization, in every work, unity matters. That's why company is unity. So how many people believe what Ekalavya has done is done right or not? हैं? क्यों wrong क्यों है बताओ? और right क्यों है बताओ? द्रोणाचार्य टिटलांग और एकलव्य टिटलांग। द्रोणाचार्य टिटलांग और एकलव्य टिटलांग। द्रोणाचार्य टिटलांग ना? एकलव्य ने तो अपना धर्म निभाया, गुरु ने अपना धर्म नहीं निभाया, है ना? तो गुरु भी दो तरह के हो सकते हैं। Any question? Sir, बोलिए। what can we do as students now to enhance this thing and take India towards the Vikas? देखिए मैं तीन ब्रेक में आया, हमारे युवाओं को तीन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। You have choice to become intellectual, task giver of the society. Give, जैसे हम कक्षा बोल रहे थे, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी में ऐसी एरिया जहां इंडिया पीछे है, उसमें कंट्रीब्यूट करने की आप सोच सकते हैं। साइंस में जहां इंडिया पीछे है वहां कंट्रीब्यूट करने की सोच सकते हैं, है ना? आपको तो ये एक आपका एक ऑप्शन आपका। There are so many opportunities available. आप में क्या इच्छा है, आप में क्या चाह, आप में क्या पोटेंशियल है? आप देखिए गार्डन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप गूगल आउट करिए, उसमें 9 तरह के इंटेलिजेंस डिफाइंड है। और जीनियस वो होता है जिसमें 9 तो रहते हैं, फिर उसमें 8 का होता, कुछ सभी में कुछ न कुछ, अंत में एक, कम से कम हर एक विद्यार्थी में एक है टाइप की इंटेलिजेंस होती है, गार्डन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको आप देखिए, आपको इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद का ही एलाबोरेशन है कि एजुकेशन इज द परफेक्शन ऑफ इंपेरेटिव ऑलरेडी इन मैन, है ना? आप देखिए कि जो ग्रोथ की बात करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ की और जो
ये आपके साइकोलॉजिकल इम्परेटिव्स है उनके ग्रोथ की, तो आप देखेंगे कि 12-14 साल तक जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बाद में उनमें रिफाइनमेंट होता है, थोड़ा बहुत कुछ कम हो गया कुछ ज़्यादा है। तो ये इसमें और फिर इकोनॉमिक इम्परेटिव में आप कोई अपना बड़ा स्टार्टअप कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तीसरा, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी के जो इश्यूज है जिनका सोल्यूशन सोसाइटी ढूंढ रही है, जिसकी वजह से सोसाइटी गलत रास्ते में कभी कभी चली जाती है, उसको कैसे ठीक रास्ते पर लाना है, तो ये ऑप्शन आपका है इनमें से। लेकिन आपको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बनना है, बात ये ऑप्शन आपका है, उसमें कोई ऐसा रेडीमेड कंट्रोल नहीं है कि हम बता देंगे कि आप ये ऐसे कर, आप ऐसे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ना, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप अपने आप को, आपकी रुचि क्या है, आप में जो इनहेरेंट पोटेंशियल्स है वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस चाहिए कि आप अपने शिक्षकों से ले सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. जी प्लीज। So, what do you think is the key challenge faced by Indian institutes of higher education? Like the main challenges faced by Indian institutes of higher education? See, I just said, how to make education fulfilling so that we live contented life. Okay? तो ये बड़ा चैलेंज है ना। जो आप देखें कि मेरे दादाजी के एथिक्स, मोरल्स मेरे पिताजी से अच्छे थे, है ना। मेरे पिताजी के मोरल्स और एथिक्स मुझसे अच्छे थे और मेरे बेटे के मुझसे कम है। ये क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जो कॉमरेडियनशिप है, फेलो फीलिंग है ना। एजुकेशन तो आप IIT में एडमिशन मिल गया, आपको डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, है ना, शादी हो जाएगी, है ना, बच्चे हो जाएंगे, और ये तो सब राजकाज का काम है, ये राजकाज का काम है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये सोचने की आवश्यकता है। ये तो होगा ही, है ना, तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। Thank you, sir. ये इसमें देखिए, ये पूरा पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। How to learn instead of what to learn. Learning, unlearning, relearning. Lifelong learning has to now become adaptability, because it is when new situation arises, you have to adapt yourself. Then skilling up, skilling is skilling. Learners have to think like employees and employees have to think learners. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, तभी आप इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मिल जाए। ये भी बात हो गई है। दो मॉडल है आपके पास डेवलपमेंट के, लीप फ्रॉगिंग वर्सेस पोल वॉल्टिंग। मेढक जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आप 47 में विकसित नहीं होगा, तो आपको पोल वॉल्टिंग करनी पड़ेगी। ऑल द टाइम वी हैव टू रेज अवर बेंचमार्क, है ना, तब ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा तेजी से। और लास्ट में 3 स्टेजेस ऑफ फुलफिलिंग लाइफ, लर्न, जो आप अभी कर रहे हो, इसके बाद अंत में जाओगे आप, और फिर वहां से आप IIT ओपन को भूल नहीं जाना, रिटर्न भी करना पड़ेगा। थैंक यू। We'll take one more question. Anybody has a question? No, sir. The system of exit learning and in IITs, how does it affect? Like, if we could get for them, if they
after that if they go for a job. So the system of exiting the learning and coming back, how does it work in the new NEP system? So you can use the mic. Yeah. See, I talked about academic bank of credit. Currently what is happening is that program has a stipulated period and it has some grace years. And if some student does not complete the program within that period, then he has to leave and his all time, energy, money goes waste. So in order to remove this hardship of learners, NEP says that you can earn credit and if situation demands, for example, किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे किसी का एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो विकसित भारत नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि मान लो किसी के माताजी पिताजी बीमार पड़ गए, कोई नियर रिलेटिव बीमार पड़ गया, कोई दूसरी कैजुअलिटी हो गई और वो छोड़ना चाहता फर्स्ट ईयर के बाद, मान लीजिए कोई बीटेक का स्टूडेंट किसी भी IIT का फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहता है ड्यू टू सर्टेन कंपल्शंस, सो ही कैन गो and he will get diploma. He will get, after first year he will get certificate, after second year he will get diploma, after third year he will get simple graduation, and after fourth year he or she will get honors degree. Okay? And then when the normalcy is restored, he or she can come back to the system. So what I said is ease of learning. लर्निंग को ज़्यादा सुगम बना रहा है। तो एक ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिट, आप बाहर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, जब आप वापस आओगे, जैसे हमारे यहाँ से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो पिछले साल हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट एग्जिट किए, हमने उनको फर्स्ट ईयर के बाद डिप्लोमा दे दिया, वो चले गए। अब वो वापस केवल हमारे यहाँ ही नहीं, वापस सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जहाँ उनको सीट उपलब्ध है, वहाँ वो एडमिशन लेकर के दे कैन रिज्यूम देयर स्टडी। तो ये एक बहुत अच्छा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मैं बताया। कोई दूसरा अच्छा कोर्स किसी दूसरे IIT से आप करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट, है ना। दूसरे यहाँ के विद्यार्थी दूसरे IIT के यहाँ का कोई अच्छा कोर्स उसको करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल लर्निंग इकोसिस्टम में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। देखिए मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ बोलता हूँ, बहुत स्पष्टता के साथ। अभी क्या सिस्टम है, यदि कोई विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एडमिशन ले लिया तो हमारे यहाँ का बधुआ स्टूडेंट हो जाता है। हम जो पढ़ाना चाहेंगे वही पढ़ेगा वो, जैसे पढ़ाना चाहेंगे वही पढ़ेगा वो, है ना। जितना पढ़ाना चाहेंगे उतना पढ़ेगा, बहुत सारी लिमिटेशन है, है ना। इसको दूर करना जिससे कि बच्चों को सीखने में सुगमता हो। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I invite Dr. Sati Guhan to give the vote of thanks. So let us thank our distinguished speaker, Professor Raghavendra P. Tiwari, for interesting talk, which provide the vision of India at 100 years of independence. I would also like to thank Director Professor Rajiv Ahuja, Registrars Dr. Dinesh for providing all the necessary supports. Also, thanks to the students, staff members and faculty for attending the talk. Now you all are invited for the high. Thank you.
tell me